तुम्ही मोहीन गुडिनेचे स्टेटमेंट आयकलां आसतलें ते म्हणटा की लोकांक जर प्रॉब्लम आसत जाल्यार तांकां रिटर्न लेटर बरोवन सी बेसिकली काल ताणें जे स्टेटमेंट केल्या इट इज व्हेरी डिक्टेटोरियल. ज्या तरेचो तुमच्या ग्रामसभा हॅज नो रायट टू ऑब्जेक्ट टू एनी डेव्हलपमेंट परमिशन विच हॅव बीन ग्रांटेड बाय परमिशन बाय अदर ऑथॉरिटीज. मागीर तशें जाल्यार तुमी पंचायतीक रिडंडंट करपाचें आनी सांगपाचें की सगळ्यो ऑथॉरिटी आयली की सरपंच ओनली हॅज टू सायन, डजंट हॅव टू पुट इट इन पंचायत बॉडी, कारण ताजो रोलूच ना न्ही. सो अल्टिमेटली डेमोक्रेसी जी आसा, जी पंचायत राज एक्ट आसा, वॉज सपोज टू बी फॉर डिव्होल्युशन ऑफ पॉवर टू दी अल्टिमेट पीपल ऑफ द कंट्री. आनी हे जेन्ना डिव्होल्युशन ऑफ पॉवराचेर जेन्ना आमी उलयता, जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन मॅन्डेटरी आसा ती जेन्ना आमी उलयता, तेन्ना माविन गुदिनोच्या सारक्याची मनोवृत्ती आसा ती दिसून येता की दे वॉन्ट टू कंट्रोल द स्टेट एज मिनिस्टर्स आनी तांकां कांय दुसऱ्याचें इंटरफियरन्स जावपाक नाका. आनी दीस इज वॉट वी आर फियरिंग रायट नाव. भारतीय जनता पार्टीची जी वाटचाल चल्ल्या ती त्या वटेन आसा जी डिक्टेटोरियल वाटचाल चल्ल्या, डिस्ट्रॉईंग. इफ यू सी द सेंट्रल लिडरशीप ऑल्सो दे आर डिस्ट्रॉईंग ऑपोजिशन. पयलीं म्हणटाले ते काँग्रेस डिफेक्टर म्हणून, पण आज खंयचीच अशी पार्टी ना जातल्यान तांणी मनीस आज आपूण विकत घेतले ना ऑर भंय घालून तांकां फोडले ना. टीएमसी आसूं, आप आसूं, काँग्रेस आसूं, शिवसेना आसूं, मागीर तुजी एनसीपी आसूं, प्रत्येकाचे खंयचे तरी. सो टू स्टे इन पॉवर दे वील डू वॉट एव्हर इट टेक्स. अँड वी हॅव सीन जस्ट दॅट हॅपनिंग इन गोवा. In light of this statement, I can tell you one thing is that this is all dictatorial. This is a kind of mindset that minister holds. ताका कित्याक बरोवपाचें रे तूं कोण? You are a minister, but the ultimate people power lies with people, the local self-help bodies, and panchayat have to take action in the matter. ताजे खातीर authorities ज्यो आसा and they have to be written. आता तुझे फेलियर धाडपा खातीर जर तूं म्हणटा की आपल्याक धाडचें म्हणून, then I think you should look at yourself and your performance as a failed minister of panchayat and failed minister of transport as well. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.